A very good evening to all of you. We would like to invite the Most Venerable Ajahn Amaro to give our first Dhamma talk under the sacred Bodhi tree. A brief introduction to Venerable Ajahn Amaro. Venerable Ajahn Amaro was born in England in 1956. Venerable Amaro received a degree in psychology and physiology from the University of London. Spiritual searching led him to Thailand, where he went to Wat Pa Nanachat, a forest tradition monastery established for Western disciples of the Thai meditation master Ajahn Chah, who ordained him as a bhikkhu in 1979. Soon afterwards, he returned to England and joined Ajahn Sumedho at the newly established Chithurst Monastery. He resided for many years at Amaravati Buddhist Monastery, making trips to California every year during the 1990s. In June 1996, he established Abhigiri Monastery in Redwood Valley, California, where he was co-abbot with Ajahn Pasano until 2010. He then returned to Amaravati to become the abbot of this large monastic community. The Most Venerable Ajahn Amaro has written a number of books, including an account of a 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara called Tudong, The Long Road North, republished in the expanded book Silent Rain. His other publications include Small Boat, Great Mountain, Rain on the Nile, and the Island, and an anthology of the Buddha's teachings on Nibbana, co-written with Ajahn Pasano, a guide to meditation called Finding the Missing Piece, and other works dealing with the various aspects of Buddhism. He has recently been awarded a new title, Tan Chau Kun Pra Racha Bodhi Varaguna, which was given to him by the Kingdom of Thailand. This evening's Dhamma talk will be entitled Under the Sacred Bodhi Tree. And we would request that any questions that come to you to please keep mindful of your questions. We'll have an opportunity for Q&A after the Dhamma talk. Please keep your questions to topic so we can focus on the theme of this evening's Dhamma talk. It will be translated into Hindi by
Samanera Mahapanyo from Wat Pananachat in Thailand, the International Forest Monastery of the Ajahn Chah tradition, of which Ajahn Amaro is one of the senior-most monks. It will also be translated at the end by Upasak from Vietnam, who will do a short summary in Vietnamese for our Vietnamese monks and nuns and lay devotees. This talk is also going to be live streamed, so you can also refer to it online to share with your friends at the end of this talk, or they should also be available to see this talk under the sacred Bodhi tree. Now we request Most Venerable to take his seat under the sacred Bodhi tree. We welcome you to this auspicious gathering at the 15th International Tipitaka Chanting Council. Namo tassa bhagavato Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So I will respectfully speak over the sound of the puja happening here. I don't wish to be rude, but this is a place where many things happen at the same time. सबसे पहले मैं जो वांगमो जी ने आचार्य अमरो जी का इंट्रोडक्शन दिया उसका मैं छोटा सा अनुवाद कर दूं। आचार्य अमरो जी इंग्लैंड के मूल निवासी हैं और इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थाईलैंड में
1979 में, जो बहुत प्रसिद्ध वहाँ के संत रहे अजान चा, वो इनके उपाध्याय रहे और इनकी दीक्षा वातपा नाना चाँद जो कि अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है उबॉन में, वहाँ पे इनकी दीक्षा हुई और शुरू के कुछ वर्ष उन्होंने थाईलैंड में बिताए। इसके बाद इनका ज़्यादातर जीवन जो है वो इंग्लैंड में चित्त विवेक और अमरावती आश्रमों में गुजरा। 1996 में आचार्य अमरो ने आचार्य प्रसन्नों के साथ अमेरिका में अभयगिरी आश्रम की स्थापना की और पिछले 10 वर्षों से ये जो इंग्लैंड का मुख्य आश्रम है अजान चा की ट्रेडिशन का अमरावती, उसके महंत हैं। ये वांगमो जी ने आचार्य जी का इंट्रोडक्शन किया था। आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस पवित्र स्थल पे, जहाँ पे एक समय पे बहुत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, खासकर की जो अभी पीछे पूजा हो रही है, उसके ऊपर मेरी आवाज़ सुनाई दे और आप सबसे वो निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत आवाज़ साफ नहीं है तो साथ देने की कोशिश करें। I am extremely at the end. Ngài Ajahn Sumedro, Ngài Ajahn Amaro, thọ giới tỳ khưu năm 1979 dưới sự chứng minh của Ngài Ajahn Chah. Sau đó thì Ngài đã đi về Anh, đã tu học dưới sự chỉ dạy của Ngài Ajahn Sumedro. Sau đó thì Ngài có thời gian hoằng pháp khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và Anh. Ngài là tác giả của nhiều tập sách quý được thế giới công nhận và được nhận danh hiệu rất là cao quý của Hoàng gia Anh. Sau buổi pháp này sẽ có những phần hỏi đáp, cho nên là đại chúng có thể đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi trong chánh niệm ngắn gọn để có được sự trả lời của Ngài. May I request that the translation go Hindi and the summary be at the end for Vietnamese? Thanks. If you can wait till the end, it's finished, then do a summary at the end. So I'm extremely honored to be here once again under the sacred Bodhi tree. This is the second time I have been able to be present for this very auspicious recitation event. I was here 2 years ago for the 13th annual Tipitaka recitation, and I'm very honored to be back here again. This time the progress through the Tipitaka is heading steadily onwards, and so now we have reached the 3 books of the Mahanidesa, the Chulanidesa, and the Patisamvidamagga. आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत सम्मान महसूस होता है कि उन्हें दूसरी बार यहाँ आमंत्रित किया गया है इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र स्थल पे, जहाँ की भगवान बुद्ध स्वयं साधना की थी। भगवान बुद्ध ने 2 वर्ष पूर्व वो यहाँ आए थे इसी प्रकार से संबोधन करने, जब 13वां समारोह हो रहा था तिपिटिका चांटिंग का, और वो देख पा रहे हैं कि काफ़ी तब से प्रगति हुई है, जिस तरह से अलग अलग तिपिटिका के निकायों की यहाँ चांटिंग चल रही है, और आज वो महानिदेश पे अपना संबोधन करेंगे। For those of you who are not familiar with the Pali Canon, these 3 books all come in the section called the Khuddha Nikaya, which is the collection of short, say, groups of discourses. And so these three books are part of that collection of shorter teachings. And all of these 3 books, they were commentaries, they were teachings given by the Venerable Sariputta.
आचार्य जी बता रहे हैं कि जो आज ये संबोधन करेंगे वो जो पांचवा निकाय है खुद्दक निकाय, उसके जो 3 आयाम हैं, 3 जो उसकी बुक्स हैं, उसमें से उन्होंने अपना संबोधन आज का निकाला है, जो कि आयस्मा सारिपुत द्वारा खुद्दक में दिया गया था. The first two, the Mahanidesa and the Chulanidesa, these are all Venerable Sariputta's commentaries on various sections of the book called the Sutta Nipata. So the Sutta Nipata is also one of the books in the Khuddaka Nikaya. So it's a commentary on that teaching that was given during the Buddha's own lifetime. So these two books, the Mahanidesa, Chulanidesa, are quite unique in that respect. The third one, the Patisambhidamagga, is more of an analytical collection of teachings closely related to the Abhidhamma. जो पहले 2 बुक्स हैं इसकी, जिसका कि आचार्य जी ने जिक्र किया, वो महानिदेश और चूल निदेश हैं, जो कि आयस्मा सारिपुत्त की कमेंट्रीज हैं सुत्त निपात पे. जो तीसरी बुक है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, जिसको कि पट्टी संवेद मग्ग कहते हैं, जो कि अभिधम्मा पे आधारित है. In the Sutta Nipata itself, we have been reciting verses today from these books. The Mahanidesa, Chulanidesa is these are commentaries on the Sutta Nipata. But the Sutta Nipata itself contains so many wonderful teachings. We could sit here for a month and only scratch the surface of the great wisdom that is there. So this evening I would just like to present a few themes from these Sutta Nipata teachings, and I will leave the Patisambhidamagga for later teachers, for later discourses, for those other teachers who want to explore and expound on that particular book, the Patisambhidamagga. I will leave that to other more expert people to give their reflections upon that. So this evening I will just look at particular themes from the Mahanidesa, the Chulanidesa, particularly the themes of anicca, impermanence, and its relationship to anatta, not self. Also the quality of Nibbana, and lastly the value of good friendship. So I hope to do that within the next hour. So let's see if we can cover that. आचार्य जी कह रहे हैं कि आज जो वो अपना हमारे सामने जो आयाम रखेंगे वो मुख्य रूप से सुत्त निपात पर रहेगा. सुत्त निपात अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बुक है, अनोखी कलेक्शन है, जिसको केवल सुत्त निपात पे यदि हम चर्चा करें तो आराम से 1 महीने का समय हमें लग सकता है, समय निकल सकता है. लेकिन आज शाम को वो केवल चूल और महानिदेश पे ही अपना वक्तव्य रखेंगे हमारे सामने, और पटी संवेदी मग्ग को जो है वो अन्य टीचर्स, अन्य आचार्यों के लिए आगे आने वाले समय में छोड़ रहे हैं. आज शाम को जो आचार्य जी अमरो जी बात करेंगे वो 3 बिंदु उन्होंने सामने रखे हैं हमारे. एक तो अनिच्च का जो संबंध है अनत्ता से, एक बिंदु ये रहेगा. दूसरा बिंदु निब्बान का रहेगा, और तीसरा बिंदु रहेगा जो कल्याण मित्रता होती, जो एक मित्रता का भाव है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो महत्व है महा और चूल निदेश में. इन 3 बिंदुओं पे आचार्य जी आज बात करेंगे. I will begin by reading a translation of one of the passages from the Mahanidesa, and this is from section 2, sutta number 4, and this is about the quality of impermanence and the fleeting, the quick and intangible nature of experience. Life, personhood, pleasure and pain, this is all that's bound together in a single mental event.
a moment that quickly takes place. सबसे पहले वो हमारे सामने एक अनुवाद रख रहे हैं महानिदेश के एक सूत्र का, जो कि जो अनिच्छ का जो भाव है उसके ऊपर है। और सबसे पहले उन्होंने जो आयाम पढ़ा, जो बिंदु पढ़ा, वो ये कहता है कि एक तो जीवन, लाइफ, और जो दुख की जो भावना है, ये सारे आपस में बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में ये सारे बंधे हुए हैं। तो इन्हें हम अलग अलग तरीकों से ना देखें। Even the spirits who endure for 84,000 eons, 84,000 kalpas, even these do not live the same for any 2 moments of mind. ऐसे जो जीव हैं अन्य योनियों में, जो कि बहुत लंबे समय तक जिनका जीवन है, 84,000 कल्प तक भी जिनका जीवन है, वो भी उनके भी जो चित्त की जो जिनकी चेतना है, वो कभी भी 2 क्षणों में एक जैसी नहीं होती है। What ceases for one who is dead or for one who's still standing here are all just the same aggregates, gone, never to connect again. एक ऐसा व्यक्ति जो कि मृत है और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित है, इन सब के जो मूल खंड हैं, वो एक ही प्रकार की उनका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि यहाँ से विलुप्त हो जाता है, और विलुप्त होने के बाद वो कभी भी वो स्कंद कभी दोबारा से जागृत नहीं होते। So even if you were a Brahma deity with an incredibly long lifespan, 84,000 kalpas, not 84,000 years, for incalculable periods of time, still, even with a mind like that, one moment is not the same as the next moment. Everything is fragile and changing, even for one with an incredibly long lifespan. The field of experience is incessantly changing. तो यदि कोई एक देवलोक का भी अगर कोई उसमें है, और उसकी जीवन आयु मनुष्य जीवन आयु से बहुत ज्यादा लंबी है, फिर भी ऐसी योनि में भी एक पल की जो चेतना होती है, और वो बार बार बदलती रहती है। कोई भी 2 पल हमारे एक जैसे नहीं होते, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे किसी और योनि में हो। The states which are vanishing now and those that will vanish in the future have characteristics that are no different from those which have vanished before. So, everything that we are experiencing now, everything that we have experienced in the past, everything that we will all experience in the future, they all have the same nature. They are anicca, changing, transient. They are dukkha, they are unsatisfactory. They are anatta. Every single condition, every one of our minds is capable of experiencing, have these same 3 characteristics. ऐसी चित्त की चेतना है जो कि उठ रही हैं, जो आगे उठेंगी, जो अतीत में उठ चुकी हैं और जो वर्तमान में उठ रही हैं। ये मूल रूप से बिल्कुल अलग नहीं है। इनके जो इनके मूल सिद्धांत हैं, वो वही 3 लक्षण रहते हैं, अनिच्छ, दुख और अनंत के। तो हमें ऐसा लग सकता है कि पहले समय में मेरे मन की चेतना अलग थी, अब अलग है, और आगे शायद कुछ और हो जाए। लेकिन मूल रूप से आचार्य जी बताते हैं कि इनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। इन सारे ही जो हमारी चित्त की चेतनाएं हैं, उनमें ये 3 लक्षण जो हैं, वो बहुत हमें सफाई से देखने में आते हैं। Another way of putting that is that all of our experience, whether we are Indian, whether we are English, whether we are American or Tibetan or German or whatever nationality, past, present, future, all our experience is cut from the same cloth. एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है कि हमारे जो भी अलग अलग जीवन में एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो हम भारतीय नागरिक हों, हम किसी अन्य देश से आए हों, वो एक ही बिंदु, एक ही
सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ऊपर से बाहर से ऐसा लग सकता है कि हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नागरिक, अलग अलग देशों के हैं, हमारे जीवन के रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से हम सब के जो एक्सपीरियंस हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। With no production, there is no birth. But with becoming present, one lives. When grasped with the highest meaning, the world has ceased when the mind stops. कोई चीज मूल रूप से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो रही है और कोई चीज क्षीण नहीं हो रही है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का, जो हम जिस प्रकार से अपनी आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है जब हम जब हम उसकी जो उसका विज्ञान है, जो उसका कॉन्शियसनेस है, जब वो रुक जाती है तब। There is no hoarding up what has vanished, no piling up for the future. Those who have been born are standing like a seed on the point of a needle. हम किसी भी एक्सपीरियंस को अपने साथ रोक नहीं सकते, उसको एकत्रित नहीं कर सकते, और हमारे सारे ही जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको हम एक सुई की नोक के समान समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटे समय के लिए हमारे साथ रहते हैं और तुरंत ही क्षीण हो जाते हैं। So this is a powerful image for our life, our experience, like a little tiny seed, like a mustard seed or a sesame seed, balanced on the point of a needle, that at any moment the seed can fall. It's a very, very fine balance, like the little children on the tightropes out on the streets. It's a balancing act. So at any moment things can fall. The quality of anicca, of impermanence, of insecurity is ever present. तो आचार्य जी बताते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम ये जो कल्पना हम कर सकते हैं इस तरह से कि वो एक राई का बीज होता है उसके समान है, और वो किसी क्षण भी बदल सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हम महाबोधि मंदिर के बाहर देखते हैं, वो जो कर्तव्य कर रहे होते हैं, रस्सी पे जो छोटे बच्चे चल रहे होते हैं, किसी भी क्षण वो बदल सकता है, वो गिर सकते हैं नीचे। तो हम अपने सारे ही जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इस तरीके से देख सकते हैं, इन 3 लक्षणों के माध्यम से। So the first line of that verse said, there is no hoarding up of what has vanished. So what has gone, we can't keep it. We might have our individual memories, but nothing can be owned of what has gone before. तो जैसे अभी इन्होंने ये कुछ लाइनें पढ़ी पहले, उसी को दोहरा रहे हैं कि जो निकल चुका है, जो हमारा जो अनुभव निकल चुका है, उसको हम किसी भी प्रकार से संभाल के नहीं रख सकते, पकड़ के नहीं रख सकते हैं। वो पूरी तरह से अतीत में जा चुका है। The second line says, there is no piling up for the future. So even though we might make plans, we have expectations. I'm due to get on a plane tomorrow to go to Thailand. Who knows what will happen? Yeah. You might have left your sandals, your chapal, in a safe place. Maybe they are there. Maybe they are not there. Maybe they've got a new owner. It's even though we might try to protect and plan for the future, we are all subject to that law of uncertainty, of anicca, that things are not sure. इसी तरह से दूसरी लाइन का आचार्य जी आगे बता रहे हैं कि आगे हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हम जो आगे आने वाला समय है उसके लिए कुछ चीज़ इकट्ठी कर लें, आगे के लिए तैयारी करें, लेकिन मूल रूप से ये चीज़ संभव नहीं है। उदाहरण वो अपना खुद का दे रहे हैं कि मुझे कल थाईलैंड जाने के लिए जहाज़ लेना है, मैं अनुमान करता हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, लेकिन ये भी अनिच्छ के बंधन से बंधा हुआ है। एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि हमने अपने जूते और चप्पल बाहर उतारे हैं और हम ऐसा अनुमान करते हैं कि वो हमें दोबारा से, हम जब बाहर जाएंगे तो मिलेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आचार्य जी बता रहे हैं कि हम ज़रूर आने वाले समय के लिए प्लान बनाएं, उसके बारे में सोचें, लेकिन ये समझते हुए, इस बात को ध्यान रखते हुए कि
जो आने वाला समय है वो पूरी तरीके से अनित्य के जो धागा है, अनित्य का धागा उससे बंधा हुआ है। तो हम ऐसा अपने मन में चेतना ना बनाएं कि इस प्रकार से जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो जरूर आने वाले समय में होगा। The vanishing of all these states that have become is not welcome. Though dissolving phenomena stand uncombined from primordial time. So even though none of these states, no experience, no perception, no object, no feeling, can be kept, when they go, we feel a sense of lack. As it says, the vanishing of these states that have become is not welcome. We want to hang on to things. We want to hang on to our possessions, our memories, our bodies, our minds, our privacy, our silence. But it keeps slipping away. That vanishing of these states is not welcome. आगे आचार्य जी बता रहे हैं सुत से कि ये जो अलग अलग हमारे मन में चीजें उठती हैं, चेतनाएं उठती हैं, ये जब क्षीण हो जाती है, जब खत्म हो जाती है, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, हम इनका स्वागत नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो खास करके जो प्रिय एक्सपीरियंस हैं वो हमारे साथ रहें, लेकिन ये बिल्कुल किसी तरीके से संभव नहीं है। और जो समय है, जो काल का जो प्रकोप है, उससे बचना पूरी तरीके से असंभव है। और तो मुख्य रूप से ये बात अभी आचार्य जी ने बताई। And the last two lines they read, though dissolving phenomena stand uncombined from primordial time. This means that it's kind of crazy that we want to hang on to things because no thing has ever stayed. Everything keeps changing. There's been zero success. Yeah, no one who has been born has stayed alive to today. It's like a 0% success rate. So that even though every condition of mind, every thought, every feeling, every body comes to its end, still we feel, just like when it was quiet and I was thinking, the other chanting stopped, and then some more chanting begins, that's it, that is exactly that. We do not welcome those changes. That's because of avijja, ignorance. आचार्य जी बताते हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अभी इस प्रकार से जो पीछे से जो चैंटिंग चल रही है, हम चाहते हैं कि अब वो रुक जाए। वो अगर रुक जाती है तो हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है, और फिर दोबारा से अगर चालू हो जाती है तो फिर हमें दिक्कत और तकलीफ होती है। तो आचार्य जी बताते हैं जब तक हम इस तरह से जो बदलते अनुभव हैं उनको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें ये तकलीफें, ये दिक्कतें इस तरह से मन में उठती रहती हैं। And the last verse reads, from the unseen, states come and go, glimpsed only as they're passing by, like lightning flashing in the sky. They arise, then pass away. जो इस तरह से जो अलग अलग चीज़ें हमारे मन में उठती हैं, उसको हम जो आकाश में बिजली जब चमकती है उस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत छोटे समय के लिए वो बिजली रहती है और फिर खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से हम जो मन में अलग अलग हमारे स्टेट्स उठते हैं, उनको इस तरह से हम समझें और इस तरह से उनको इस तरह से देखें कि बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं, और हम ये ना समझें कि ये संभव होगा कि जैसी मेरी मन की चेतना अभी है वही आगे भी रहे। So how can we skillfully relate to this quality of uncertainty, of change? So just as the Buddha points out in the teaching, and Sariputta explains here that if we try to hang on to the past or try to live in the imagined future, we are disconnected from reality. So as the Buddha said in the Bodhgaya Sutta, in the Majjhima Nikaya, he said, do not dwell upon the past.
Do not dwell upon ideas of the future, but bring your attention fully and completely to the present reality. And this is what brings the greatest blessings. This he calls a fortunate attachment, or a fortunate abiding, to bring the heart fully, completely, to be awake in the present reality. आगे आचार्य जी बताते हैं कि हम इस तरह से अगर ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हमारे मन में बदल रही हैं तो इनसे हमारा संबंध जो है, हमारी जो इनसे रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की रहे, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए वो भदेक रथ सुत्त का उदाहरण देते हैं, जिसमें कि भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं और जो अतीत में हैं और जो अनागत हैं, जो आगे आने वाली हैं, उनसे हम अपना चिपकाव ना रखें। जो सबसे सबसे अच्छी स्थिति है, जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, और वो स्थिति जो सबसे आरामदायक है, वो स्थिति यह है कि जो वर्तमान में चल रहा है, जो पच्छुपन्न है, हम उस स्थिति के साथ, उस मन की चेतना के साथ रहें। In another teaching, which I was reminded of when contemplating this image of the seed balanced on the tip of the needle, someone asked the Buddha one time, how mindful do you have to be in order to realize enlightenment, to be fully awakened? And the Buddha said, well, imagine you're in a crowded marketplace and there's a dancing performance happening. Everyone is crowded around, people want to be close to the stage, they're watching the dancers, and you have a jar of water on your head filled to the brim, so the water is bulging over the top, and you have the jar balanced on your head, and behind you there is an executioner, a man with a sword, and if you spill one drop of water as you walk through the crowded market, then whoosh, off comes your head. Says that's how mindful you need to be. So the Buddha was very gifted at giving memorable images to help us to really take the teachings to heart. But here in Bodhgaya, it's a very good opportunity, moving through crowds, to practice the same kind of quality of balance and attention, careful and full awareness of each moment. एक और उदाहरण देते हैं आचार्य जी, वो एक सूत्र में से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान बुद्ध से ये पूछा जाता है कि कितनी माइंडफुलनेस जरूरी है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ये उदाहरण देते हैं कि आप कल्पना करिए कि एक बहुत भीड़ वाली बाजार से, जिसमें कि कुछ नृत्य चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत भीड़ वाले माहौल से आप गुजर रहे हैं और आपके सिर पे एक पानी से भरा मटका रखा हुआ है जो पूरी तरह से ऊपर तक भरा हुआ है, और आपके पीछे एक एग्जीक्यूशनर चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है तलवार लेके। अगर उस मटके में से एक भी बूंद पानी का छलकता है तो वो तुरंत आपकी जो गर्दन है उसको काट देगा। तो इस स्तर की सती, इतनी ज्यादा माइंडफुलनेस जरूरी है निर्वाण की प्राप्ति के लिए कि ऐसी परिस्थिति में एक बूंद पानी का भी उस मटके से ना छलके। और आचार्य जी आगे उदाहरण देते हैं कि बोधगया में भी जब हम चलते हैं, बोधगया की सड़कों पे, जहाँ की बहुत अलग अलग प्रकार के वाहन भी हैं, लोग भी चल रहे हैं, पशु पक्षी भी हैं, किसी दिशा से कुछ भी आ सकता है, तो बोधगया में भी हमें इस प्रकार की सती, इस प्रकार की माइंडफुलनेस की जरूरत पड़ती है। In this teaching from the Mahanidesa, it says this quality of change is not welcome, as I was mentioning before. So, what do we do? How can we relate to that quality of change? But I would say that it's only not welcome to a mind that is attached to self-view, to Sakkaya Ditthi. When the mind is ignorant, when it does not see clearly, then change is not welcome. But if the mind sees with right view, if we see things in terms of Dhamma rather than in terms of self-view, then instead of
the quality of change being threatening, being unwelcome. Instead, it is liberating. आगे आचार्य जी बताते हैं, महानिदेश से आगे उदाहरण हमें देते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थिति है जिसमें चीजें बार बार हमेशा बदलती रहती हैं, इसका हम स्वागत नहीं करते, इससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो तभी तक ऐसी स्थिति है, हम उस बदलने वाली अनिश्चय की जो स्थिति है उससे केवल तभी तक घबराते हैं, उसको तभी तक अपने से दूर करते हैं जब तक कि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, जब तक कि हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक नहीं है, जब तक कि हमारे मन में मैं और मेरे का भाव, जो अत्ता का भाव है, जब तक मन में वो भाव है तब तक बदलती स्थितियों से हम घबराते हैं, हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, हम उन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, अगर हम विद्या से जो हमारे आसपास चीजें उनको देखने लगते हैं जिसमें कि मैं और मेरे का भाव नहीं है, जिसमें कि अत्ता का भाव नहीं है, तब ऐसी मन की स्थिति से जब हम बदलती परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। So the first thing is to pay careful attention to the present reality, and the second thing is to change the attitude towards that reality. So we change from a self-centered view to a Dhamma-centered view. Our teacher Ajahn Amaro would say, if you seek for security in that which is insecure, that which is unstable, you have to be disappointed. If you look for certainty in that which is uncertain, you have to be disappointed. You're looking in the wrong place. आगे बताते हैं कि दो बिंदु आगे बताते हैं कि अगर हम जो बहुत ध्यान से जो परिस्थिति आज हमारे सामने अभी है उसमें बहुत ध्यान से अटेंशन लगाएं, एक जो सती का भाव है, और साथ ही साथ उस परिस्थिति के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी मन की चेतना है, उसको बदलने की कोशिश करें। एक मैं और मेरे के भाव से, सेल्फ सेंटर्ड भाव से एक धम्मा सेंटर्ड भाव, जो आचार्य जी ने कहा धम्मा सेंटर्ड, मतलब हम परिस्थितियों को उस तरह से देख पाएं, उस तरह से देखें जिस तरह की वो असल में हैं, कि वो बदलती रहेंगी और वो मेरी नहीं है। और अजान चा का वो उदाहरण देते हैं। अजान चा अक्सर ये बताया करते थे कि हम तब तक ग्रस्त रहेंगे, हम तब तक पीड़ित रहेंगे, हम तब तक परेशान रहेंगे जब तक कि हम ऐसी चीजें जो कि अनित्य हैं, जो कि जिनका कैरेक्टर बदलने का है, उनमें हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं, तब तक हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो मूल रूप से बार बार आचार्य अमरो हमारा ध्यान इसी बात की तरफ ले जा रहे हैं कि एक तो हम बहुत ध्यान से चीजें जैसी हैं वैसी उनको देखें, और दूसरा उनकी तरफ जो हमारा जो चेतना है, जो एटीट्यूड है, उसको हम बदलें। So when you think that you've left your sandals by the main gate, but you actually had them in your bag all the time. When you look for your sandals at the main gate, where are my sandals? Somebody took my sandals. Where have they gone? And then you're looking in the wrong place. You're not going to find them there. You're not going to find certainty in sight, sound, smell, taste, touch, thought, and feeling. It's not there. But if we look in our bag, oh, my sandals are in my bag, then you're looking in the right place. So where we can find certainty and security is in what we call the three refuges, Buddha, Dhamma, Sangha. This is where security can be found. The reality of the Dhamma and the Buddha and the Sangha, these are the foundation for certainty, security, and for liberation. तो आगे उदाहरण और देते हैं आचार्य जी हमें कि अगर हमने जैसे कुछ देर पहले बात की कि हमने अगर अपने जूते चप्पल बाहर गेट पर छोड़ दिए हैं और फिर हम उनको जाके ढूंढते हैं, वो नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपने साथ अपनी बैग में रख लें तो हमें इस तरह की दिक्कत के मेरे जूते गायब हो गए, मेरे चप्पल गायब हो गए, नहीं आएगी। तो ये उदाहरण देते हैं इस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए कि यदि जब तक हम लोग
निश्चितता ढूंढ रहे हैं ऐसी सारी चीज़ों में जो कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो आँखों के माध्यम से हो, चाहे वो कानों के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी काया के माध्यम से हो, उसमें अगर हम निश्चितता और संतुष्टि ढूंढेंगे तो हम हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। हम असल में जो सुरक्षा है, जो निश्चितता है, वो 3 रत्नों में है, बुद्ध, धम्म और संघ के 3 रत्नों में। In the Meghiya Sutta, the Buddha describes how when the heart is fully open to the truth of anicca, when it really awakens and knows that complete truth of change, of uncertainty, then that is not just related to the external world of what we see and hear, but also related to the perceptions we have of me and mine. I am a person, I'm a man, I'm a Theravāda monk, I'm British, I'm American, I'm Indian, I'm a woman, I'm old, I'm young, I'm healthy, I'm sick. All these I ams are also seen as anicca. They are impermanent, they change, there's nothing fixed there. So, that insight into impermanence, into uncertainty, leads to the recognition of anatta, of not self. How could these changing perceptions be absolutely and completely who and what I am? So, through that doorway of anicca, then the truth of anatta is revealed. And in that realization of anatta, then the heart lets go of all those feelings of I and me and mine, what is called asmimana, the conceit of identity. That too is let go of. आगे मेघ्य सूत्र का उदाहरण आचार्य जी हमें देते हैं कि जो अनित्य का जो आर्य सत्य है, उसको हम केवल इस तरह से ना समझें कि जो बाहर चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो बाहर के जो हमारे इंद्रियां हैं उनसे हमें एक्सपीरियंस हो रही हैं, वो तो हैं ही, एक स्तर पे वो तो हैं ही, लेकिन इसको जो हमारी अपनी खुद की जो संज्ञा है, जो अपने परसेप्शंस हैं, उदाहरण के तौर पे उन्होंने अपने उदाहरण दिए कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक थेरावाड भिक्षु हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक कन्वेंशन लेवल पे ये सही है, लेकिन ये भी अपने आप में फिक्स नहीं है, ये भी अपने आप में अनित्य नहीं है। जब हम अनित्य के माध्यम से, अनित्य के दरवाजे से हम एक्चुअली अनंत की तरफ बढ़ सकते हैं कि जिस चीज को मैं एक्सपीरियंस अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज मेरी कैसे हो सकती है। तो जब हम इस पे फोकस करते हैं कि जो चीज बार बार बदल रही है, जिससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती लंबे समय तक, वो चीज मैं और मेरी कैसे हो सकती है। तो आचार्य जी हमें बताते हैं कि इस तरह से जब जो हमारा मन है वो जब चीजों को पकड़ना और अपने साथ रखने की कोशिश छोड़ देता है, तो हम अनंत की तरफ बढ़ते हैं। और जो आखिरी पड़ाव है इस जर्नी का, जो अस्मि मान का पड़ाव है, जो एक बहुत हल्की सी भावना फिर भी रह जाती है कि बेशक ये चीजें मेरी नहीं है, पर फिर भी जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें तो कहीं मैं है ही ना छुपा हुआ। तो आचार्य जी बता रहे हैं कि हम अनित्य का बोध करते करते उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां कि हम अस्मिमान को भी छोड़ दें। Then in that same sutta, the Meghiya Sutta, the Buddha says, when the heart is free of that conceit of identity, free of asmimana, that is Nibbana here and now. आगे मेघ्य सूत्र को बढ़ाते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जब मन की चेतना इस प्रकार की हो जाती है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो मैं और मेरे का भाव है उसको पूरी तरीके से छोड़ देता है, वही निब्बान की प्राप्ति। और वो निब्बान की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर की स्थिति, कोई मेटाफिजिकल चीज है, वो ऐसी चीज है जो यहाँ इसी क्षण, इसी समय, इसी परिस्थिति में हम सबके लिए उपलब्ध है। यदि हम इस प्रकार से, जैसा आचार्य जी बता रहे हैं, इस प्रकार से
क्रमबद्ध तरीके से अनिच्च से बढ़ते हुए सकाय दिट्ठी को छोड़ते हुए, मैं और मेरे भाव को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके अस्मिमान को छोड़ने की स्थिति में अपने मन को ले चलें। So Nibbana is not some kind of special heaven that you go to when an arahant passes away, but Nibbana is the coolness of the heart when there is a complete freedom from the limitation of I and me and mine. तो आचार्य जी बताते हैं बहुत अहम बिंदु की तरफ वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि निब्बान की स्थिति को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई एक बहुत ही अलौकिक स्थिति है जो जिसमें जो यहाँ से बहुत दूर है, जिसमें कि कोई किसी प्रकार के हेवन की प्राप्ति होती है। वो केवल इसी स्थिति में यहीं इसी धरती पे जब हमारा मन जो है वो चीज़ों को पकड़ता नहीं है, वो चीज़ों को मैं और मेरे के भाव से नहीं देखता है, वही उसी को निब्बान की स्थिति बताया गया है सुत्तों में भगवान बुद्ध द्वारा। तो आचार्य जी बहुत अहम मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अक्सर ये स्थिति हमारी रहती है कि निब्बान तो बहुत दूर की चीज़ है, उसको प्राप्त करना मुश्किल है, पर आचार्य जी बता रहे हैं कि वो एक चीज़ है जिसको कि हम इस क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। So Nibbana means coolness, but maybe the evening is kind of cold already, but it also the taste of hot tea when you're cold, you have that feeling of that's Nibbana also, that kind of the feeling of relief in the heart. So even though the word means coolness, it's really that letting go of tension and freeing of the heart. This is what is meant by Nibbana in a complete and full way. और उदाहरण देते हैं आचार्य जी हमें कि निब्बाना को सुत्तों में ठंडेपन से कंपेयर किया गया कि मन में शांति, मन में एक ठंडक सी आ जाती है। लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि ऐसी शाम में जबकि ठंड बढ़ रही है और हम एक थोड़ी सी गर्म चाय पीते हैं, उससे भी हमें एक स्थिति मन में उठती है जिससे कि हमें बहुत शांति का एहसास होता है। उसको भी वो बताते हैं कि इस प्रकार की शांति जब मन में स्थापित हो जाती है और बदलती नहीं है, वो एक निब्बान की स्थिति है जिसमें कि हम पूरी तरीके से किसी भी चीज़ जो मन में चीज़ें उठ रही हैं उनसे उनको लेट गो करते हैं, उनको हम पकड़ के नहीं रखते हैं। मूल रूप से वो निब्बान की स्थिति बता रहे हैं। So this teaching on impermanence, on anicca, this comes from the Mahanidesa, and Mahanidesa is the Venerable Sariputta's commentary on the book of the eights, the Atthakavagga of the Sutta Nipata. The other teachings I'd like to share briefly with you come from the Chula Nidesa, which is the commentaries on the way to the beyond, the last chapter of the Sutta Nipata, and also the sutta called the rhinoceros, the lone rhinoceros. तो अभी तक जो आचार्य जी ने हमें बताया वो जो अनित्य की चीज़ें बताई वो महानिदेश से बताई, जैसे उन्होंने बताया वो सारीपुत्त की कमेंट्री है। अब वो हमें लेके जा रहे हैं चूल निदेश की तरफ, और इस सुत्त को अंग्रेजी में लोन राइनोसरस, जो जंगल में जो गेंडा होता है जो हमेशा अकेला रहता है, ऐसा देखा गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि जो गेंडा जो जानवर है वो पूरी तरीके से अकेला रहता है, वो ये पसंद नहीं करता है कि वो और जानवरों के साथ रहे। तो उस सुत्त का उदाहरण आचार्य जी देने वाले हैं। So in that chapter, the way to the beyond, the Parayana, there are a list of meetings where different Brahmin students came to see the Buddha and ask questions. So in the Parayana, there's a long series of questions of these young Brahmin students who came to ask the Buddha to clear their doubts or to help them to understand the world and their mind and the reality of things. So I'll mention passages from 3 of these young Brahmin students who came to the Buddha. The first one is called Kappa. इस सुत्त में आचार्य जी बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि भगवान बुद्ध के पास आते हैं सवाल पूछने के लिए, और 3 सवालों के उदाहरण आचार्य जी हमारे सामने रखेंगे। जो पहला इसमें विद्यार्थी है, ब्राह्मण विद्यार्थी जो भगवान से सवाल पूछता है, उसका नाम है
कप्पा Kappa. कप्पा नाम है पहले का। तो अब Cup of tea. वो सवाल बताने वाले हैं आचार्य जी। So the question that Kappa asked the Buddha was, is there a place of security? Is there some kind of refuge in this kind of turbulent and uncertain world of samsara? Everything is so changeable and insecure, unstable. Is there a place of stability? Is there any kind of security in this complex and changing, unstable world? पहला सवाल जो कप पूछते हैं भगवान से वो ये है कि इस संसार में जहाँ चीजें बार बार बदल रही हैं, जो किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं हमें लगती है, दिखती है, क्या ऐसे संसार में कोई ऐसी स्थिति है जो कि वास्तव में सुरक्षित और स्थिर हो? So the Buddha responded, he said, yes, indeed, there is a place of security. There is an island in this turbulent, this wild stream of samsara, this rough and wild ocean of samsara, and this island is called Nibbana. This is the island that is the place of security, and it is a place of the Pali is anadanang akinchanang. It's a place of non-owning, of non-possession. It's a place of non-grasping. That is the only, location of security in this turbulent, wild, stormy sea of samsara. तो भगवान बुद्ध कप को जवाब देते कि हाँ जरूर इस तरह की एक जगह है, जरूर एक द्वीप का उदाहरण देते हैं, एक टापू का उदाहरण देते हैं कि संसार को अगर हम एक जो जिस तरह से एक बहुत बड़ा दरिया होता है, जो ओशन होता है, उस तरह से समझें, तो जरूर ऐसे जो संसार का जो दरिया है उसमें जरूर ऐसा एक टापू, एक द्वीप उपलब्ध है जहाँ पे कि हमें स्थिरता और सुरक्षा मिल सकती है, और उसी को निब्बान बताते हैं। So this is the pointing to the way of realizing Nibbana is that letting go of the feeling of owning, like I mentioned yesterday, that quality of mana, of mama, this is mine, I am the owner, this belongs to me. So Nibbana is a place of non-owning, of a non-possession. It's a place of non-grasping, non-clinging. Anadanang akinchanang. The heart is free of grasping, and that brings this quality of ease and coolness. तो आगे बढ़ाते हैं गुरुजी के आचार्य जी के निब्बान को फिर भगवान बताते हैं कि वो जगह है जहाँ पे कि हम किसी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम इस तरह से नहीं देखते हैं चीजों को कि ये मेरी है, इसको मैं अपने पास सुरक्षित रखूं, इसको मैं अपने साथ रखूं, ये इन चीजों को मैं पकड़ के रखूं। तो इन भावों से जब हम धीरे धीरे अपने मन को मुक्त करते हैं तो वही निब्बान की स्थिति वो बताते हैं। If I think I own this silence, suffering will arise. बहुत अच्छा भी उदाहरण दिया, जिस तरह से अब पीछे से चैंटिंग बंद हो गई है, तो अगर आचार्य जी कहते हैं यदि मैं ऐसा सोचूं कि अब ये जो शांति अब हमें महसूस हो रही है ये मेरी है, तो मेरे मन में तो दुख जागना स्वाभाविक ही है। So not even owning silence brings that coolness to the heart. तो शांति को भी अगर हम शांति से भी अटैच होते हैं और उसको हम मानते हैं कि ये मेरी है, ये मेरे साथ रहे, तो हमें जरूर दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा। So the second of the students I'd like to mention was called Upasiva, and Upasiva was asking a question about Nibbana and what happens to an enlightened being when they pass away. And as a young student, people ask this kind of question. They say, well, this arahantship, the total liberation, this is the perfection of human spiritual potential. Something great must happen. You must go to some really good place when you pass away, or not, or what happens? So this was the question of young Upasiva. He said, one who has reached the end,
An arahant, when they come to the end of their physical life, do they no longer exist? Do they disappear? Or are they raised up into some kind of exalted, permanent, heavenly state? Or what happens? दूसरा छात्र जो था ब्राह्मण छात्र की गुरुजी हमें आचार्य जी हमें बता रहे थे। तो दूसरा जो छात्र था उसका नाम था उपशिव, और वो सवाल पूछता है कि जो एक अरहंत होता है, जो एक मुक्त व्यक्ति होता है, मृत्यु पे उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है? क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, या क्या वो किसी एक बहुत ही अलौकिक स्थिति में, अलौकिक जगह पे चला जाता है? तो मृत्यु पे अरहंत का क्या होता है, ये दूसरे छात्र का सवाल है। So the response of the Buddha was, and my translator might be tested here, but we'll see. One who has reached the end has no criterion by which they can be measured. That which could be spoken of is no more. तो भगवान जवाब देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जिसने कि ये दरिया पूरी तरह से पार कर लिया है, उस स्थिति का वर्णन करना शायद कुछ मुश्किल है। You cannot say they do not exist, but when all modes of being, all phenomena have been removed, all means of speaking have gone too. ऐसी परिस्थिति को भाषा में बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अब कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अनित्य है। तो ये जो परिस्थिति है, इसका वर्णन कर पाना काफी कठिन है। So this, I feel, is one of the most profound and wise teachings in the Pali Canon, really. And it points out how we conceive things in such personal terms. Where does an arahant go? The Buddha is saying, where doesn't apply. Going doesn't apply. Individuality doesn't apply. Time doesn't apply. So if we let go of time, individuality, and location, there's not a lot to hang on to. So the Buddha said you can't speak about it. When all modes of being, all phenomena are removed, all means of speaking have gone too. Language is related to the five khandhas: material form, feeling, perception, mental formations, consciousness. That which can be spoken of is the five khandhas. The five khandhas are separated. That which can be spoken of is no more. So you can't say they are annihilated, but just even to say they implies an individual. And the passing of time. They were alive, now they're not. Well, that implies past, present, future. The Dhamma is akaliko, is timeless. So the Buddha never talks about, quote unquote, what happens to an enlightened being after they pass away. He simply says this: that which can be spoken of is no more. That the way that we think in terms of time, of individuality, of place, that doesn't apply. But he says, the experience of parinibbana is the highest happiness. But that's all. So then the mind thinks, well, this is some kind of super heaven then. But if the Buddha said, no. Any way of conceiving an identity, a body, a place, a time, that is based on ignorance. It's only when the heart lets go of individuality, of time, of location, then it awakens to its own nature, which is a Dhamma. The mind is not a person. The mind is Dhamma. जो जिस तरह से ये सवाल पूछा गया कि एक अरहंत निब्बाण के बाद कहाँ जाता है, आचार्य जी बताते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि ये इसके पीछे जो एजम्पशंस है, इसके पीछे जो सोच है, वो अपने आप में धम्म के अनुकूल सोच नहीं है। कहाँ से प्रतीत ये होता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ की अभी एक व्यक्ति है और कहीं जाएगा। ये सोच
धम्म के अनुकूल नहीं है। जाना से प्रतीत होता है कि अभी हम कहीं हैं और कहीं जाना है, मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि कहीं है और जो कहीं जाएगा, ये धम्म के अनुकूल नहीं है। फिर आचार्य जी बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, व्यक्तित्व की, कि एक व्यक्ति है जो आज इस स्थिति में है और जो निब्बान, जो अरहंत बनने के बाद, निब्बान के बाद कहीं जाएगा। तो व्यक्तित्व का भी जो समझ है वो भी उचित नहीं है। और फिर समय काल, अभी यहाँ है, निब्बान के बाद कुछ समय के बाद निब्बान की प्राप्ति होगी और कहीं जाएगा। तो काल और समय का जो एजम्पशन है, जो सोच है, वो भी अनुकूल नहीं है। तो भाषा जो है वो खंडों के दायरे में बंधी हुई है। जब तक कि हम इस भ्रम में हैं कि जो खंड हैं वो मैं हूँ, मेरे हैं, और उस प्रकार से जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं खंडों के माध्यम से जीवन को देखते हुए, तब तक भाषा जो है वो निब्बान की परिस्थिति को समझने, भाषा निब्बान की परिस्थिति को दर्शाने में असक्षम है। तो आखिरी बिंदु जो उन्होंने कहा कि जब व्यक्तित्व की कल्पना, मन व्यक्तित्व की कल्पना को जब छोड़ पाता है, जब छोड़ देता है, तो लगभग वही निब्बान की स्थिति है। लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि जब मैं आपको ये चीज बताता हूँ वो भी भाषा के माध्यम से बताता हूँ। तो भाषा का खंडों से आचार्य जी ने बताया एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो ये संभव लगभग नामुमकिन है कि हम पूरी तरीके से भाषा का उपयोग करते हुए निब्बान का वर्णन कर सकें। इस लिमिटेशन को हमें समझना होगा इस चीज निब्बान की स्थिति को समझने के लिए। The third of the students was called Mogaraja, and he asked a related question, similar question. So the question that he had for the Buddha was, how can we best evade the king of death? What is the means, what is the method whereby we can avoid the king of death? How can we escape the grasp of death? So these bodies die, but if we recognize the body is not self, rupang anatta, then when the body dies, why should that affect the reality of what is? So the Buddha says to Mogaraja, it is by seeing the five khandhas, rupa, vedana, sanya, sankara, vijnana, the five khandhas, the five aggregates, seeing these as empty. If you see the emptiness of the five khandhas, this is the best way to evade the king of death, so that the mind is encouraged to let go, to not attach, to not identify with the body, with feelings, perceptions, thoughts, emotions, memories, ideas, states of consciousness. And when the mind no longer identifies with the five khandhas, then, as he says, the king of death cannot find you. Because the mind that is awake, that is aware, that knows, is intrinsically liberated. It is unattached to the five khandhas, what we call the citta, and its activity of awareness, of knowing, or we call vijja, awakened awareness. That is what knows the five khandhas, but it is not attached or identified or limited by the five khandhas. Just so like a mirror reflects images and forms and light, but the mirror is not affected, is not distorted, it's not excited by beautiful things, it's not disgusted by ugly things, it just reflects. In the same way, the quality of vijja, awakened awareness, it knows beauty and ugliness, sound and silence, comfort, discomfort, but it is not confused or limited by that. That which knows confusion is not confused. That which knows pain is not painful. That which knows agitation is not agitated. So that which knows the world is not of the world. So that when we see the five khandhas as empty of substance, as to see they are anicca, dukkha, anatta, then the heart is awake, is aware, and the king of death cannot find it.
तीसरा जो छात्र था, ये कुछ मुश्किल विवरण आचार्य जी ने दिया है, मैं कोशिश करूंगा इसको आप तक पहुंचाने का। तीसरा जो छात्र था उसका नाम था मोगराज। वो सवाल पूछता है भगवान से कि जो मृत्यु का दूत है, जो किंग ऑफ डेथ है, उससे हम कैसे बचें, मृत्यु के दूत से हम कैसे बचें। भगवान जवाब देते हैं कि मृत्यु के दूत से बचने का तरीका केवल जो हमारे 5 खंड हैं उनको अपना न मानना, उनको इस तरह से ना देखा जाए कि ये मैं और मेरा है। उदाहरण के तौर पे जो हमें वेदना होती है, जो वेदना जो जिस चीज़ को कंडीशन करती है, जो उसके आसपास की संज्ञा है कि मैं जिस तरह से मेरी कंडीशनिंग हुई है उसके अनुसार मुझे वेदना होती है, लेकिन क्या मैं हूँ? इसमें कोई वास्तव में कोई मैं है जिसको ये हो रहा है, कि या ये चीज़ें स्वयं उठ रही हैं? इसी प्रकार से जो विज्ञान है, जो संस्कार हैं, वो इन खंडों को अगर हम मैं और मेरे के भाव से ना देखें, केवल वही तरीका है मृत्यु के दूत से बचने का, किंग ऑफ डेथ से बचने का। जब मन की स्थिति, चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो इन खंडों के साथ आइडेंटिफिकेशन, इनको मैं और मेरा समझने खत्म कर देता है, बंद कर देता है, तो जो मृत्यु का दूत है वो आपको पकड़ नहीं सकता है, वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसमें फिर आचार्य अमरो ने आगे बताया कि वो मन का जो एक कैरेक्टर है, चित्त, जिसको इन्होंने भी कहा, जो कि खंडों को केवल जानता है, वो खंड है नहीं। उदाहरण देते हैं, वो एक शीशे का हम उदाहरण लें। एक शीशे के सामने जो भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, वो शीशा केवल उनकी जिस तरह की जो भी चीज़ उसके सामने आ रही है, वो खूबसूरत है, बदसूरत है, छोटी है, बड़ी है, वो केवल उसको दिखा देता है जिस तरह से वो है। उस जो शीशे के सामने काया आ रही है, उससे शीशे पे कोई असर नहीं पड़ता है। शीशा उस काया के साथ छोटा बड़ा, प्रिय अप्रिय नहीं होता है। तो इसी तरह से आचार्य जी बताते हैं कि मन की वो स्थिति या वो मन जो कि अलग अलग परिस्थितियों को जानता है, वो उन परिस्थितियों के साथ फिर बहता नहीं है। तो जैसे उन्होंने और उदाहरण दिए कि वो मन जो गुस्से की स्थिति को जानता है, उस मन में गुस्सा नहीं है। वो मन या वो चित्त, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जो कि विलास की स्थिति को जानता है, वो स्वयं विलासित नहीं है। तो ये जो जानने वाला जो जानने वाली मन की एक जो कैरेक्टर है, उसकी तरफ आचार्य अमरो जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तीसरा छात्र जो मोगराज था उसके सवाल के माध्यम से। Well, the last thing I'd like to share with you is about companionship. The quality of vichar, awareness, is something that is available to all of us, but we don't always make use of it. Its opposite is avijja, ignorance, which again is available to us, and unfortunately we do make a lot of use of ignorance. But the Buddha spoke of the causes of ignorance and the causes of that awakened awareness. In the Chula Nidesa, one of the suttas that Venerable Sariputta comments upon is called the lone rhinoceros, the Khaggavisana Sutta. That's the correct pronunciation, Khaggavisana. And one of the verses of that sutta, it says, if you can find a trustworthy companion with whom to walk, then go with them, content and mindfully, overcoming every threat of danger. But if you cannot find a trustworthy companion, then go alone, like a wandering rhinoceros, alone in the woods. Better it is to walk alone than to keep the company of fools. So
the last thing I'd like to share with you is the importance of the company we keep, how we spend our time, who we choose to be with, because that has a direct connection to what gives rise to vijja, to awakened awareness, or if we don't have good companions, we don't choose good friends, what gives rise to ignorance, to avijja. आखिरी बिंदु जो आज आचार्य जी इस पर संबोधन करेंगे वो है हमारे जो साथी हैं, जो मित्र हैं, ये हम किस तरह से चुनें और इनका हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो जिस भगवान बुद्ध के मार्ग पे हम चल रहे हैं, उस मार्ग पे हमारी जो प्रगति है उसका हमारे साथियों से, हमारे मित्रों से जो घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में आखिरी बिंदु आचार्य जी हमारे सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सुत्त, जिस सुत्त को हम सरल रूप से जो गेंडे की जो उदाहरण दे रहे हैं उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि वो बताते हैं कि अगर तो हमें एक ऐसा मित्र, ऐसा साथी या ऐसे मित्र, ऐसे साथी मिलने संभव हैं जो कि हमें हमारे विद्या के मार्ग की तरफ हमारे साथ चल सकें, जिनका मन और जिनकी सोच और जिनके विचार और जिनके क्रिया इसी प्रकार की हैं, जो धर्म से अनुकूल हैं और जो हमारे साथ विद्या के मार्ग पर चल सकें, तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो इस सूत्र में बताया गया है कि बेहतर है कि हम अकेले ही इस मार्ग पे चलें, बनस्पत की किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्तियों के साथ जो कि हमें विद्या की तरफ बढ़ने के बजाय अविद्या की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इस मार्ग पे साथियों की जो भूमिका है वो बहुत अहम बताई गई है, मित्रों की भूमिका बहुत अहम बताई गई है। आचार्य जी हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित अब कर रहे हैं। As the Buddha does in many teachings, he describes a causal sequence. He says, if you choose good friends, you choose to spend time with sapurisa, good people, then that will increase the opportunities for you to listen to the good Dhamma, the Sadhamma. If you listen to the good Dhamma, this gives rise to faith. So when faith increases, then this gives rise to wise reflection, yoniso manasikara. As wise reflection is developed, then this increases the quality of sati and sampajanya, mindfulness and clear comprehension. When there is mindfulness and clear comprehension, then we are naturally restrained. We don't get lost in our moods. An easy way of thinking this is we are able to be responsive, not reactive. We don't just act on impulse. So indriya samvara, restraint of the senses, is to not be impulsive or compulsive, but to be able to respond carefully to feelings of like and dislike. When there is restraint of the senses, then that deprives the three unskillful roots, unskillful thought, unskillful speech, unskillful action. It deprives them of their strength. It removes the fuel, the energy from those. When the three unskillful roots, unskillful speech, action, and thought, diminish, that diminishes the strength, that lowers the strength of what we call the five hindrances: sense desire, ill will, restlessness, dullness, and doubt. The nivarana, again, they lose their fuel. They've got no power. There's no petrol in the tank. So when the five hindrances are diminished, then that removes the fuel of ignorance. So he describes this, the basis of ignorance, and it starts off with, who are your friends? Who do you spend time with? What are you making choices about with respect to your time? Where do you go? Who are you with? And so that if we are interested in increasing awareness and wakefulness and being able to evade the king of death, and we can work skillfully in the world with the faculties that we have, then